अ, अगर आपको अपलोड एग्रीमेंट एग्रीमेंट को अपलोड करना है तो अपलोड एग्रीमेंट बटन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको जो नाम है वो दिखाई देगा, कंज्यूमर नंबर दिखाई देगा, एप्लीकेशन नंबर और कॉपी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो अभी हम क्लिक करेंगे चूज फाइल, विल क्लिक ऑन द चूज फाइल एंड अपलोड एग्रीमेंट और सबमिट। एक बार हमने यहाँ से एग्रीमेंट को सबमिट कर दिया है, अब हम इंस्टॉलेशन डिटेल्स को सबमिट करेंगे। So once we have now uploaded the agreement successfully, now we have clicked on the submit installation details, and this is the first stage where the installation details have been submitted. Now this is the form where a consumer has filled up the form. So while consumer is filling up the form, the type of location is not mandatory for the consumer, but when a vendor is filling the submit install when a vendor is filling the installation details, then the type of location and the latitude longitude is very important. So I click here, select the location as urban, and then here we have already the file. I click on pick from map. Okay, this one. Okay, so यहाँ पे हमने select करेंगे हम एक location उसको। तो यहाँ पे इस पेज पे ये सबमिट इंस्टॉलेशन का जो पेज है, यहाँ पे हमने अ, ये पहला पेज है जहाँ पे इंस्टॉलेशन डिटेल्स को फिलअप करना स्टार्ट करता है। तो जो टाइप ऑफ लोकेशन और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये कंज्यूमर ने अगर भरा नहीं होगा तो वेंडर को मैंडेटरीली ऐड करना ही है, और ये दोनों करने के बाद ही सेव एंड नेक्स्ट बटन एनेबल होगा। The next stage is where he has to enter the details of the inverter and the PV module. So say if he has selected the phase as a single phase, the phase of the inverter, then he has to enter the inverter details. I'll enter the manufacturer over here. The capacity of the inverter, the quantity of the inverter, and click on the add serial number. So here I have added the serial number and click on the save. So this serial number is added successfully. Now similarly we have to add the solar PV module details. We select the manufacturer of the solar PV module, then we uh, mention the rating or the capacity of each PV module. Say I say as 450 and the quantity is 2. Now I'll click on the add serial number. Now on this page, I'll enter the details. So I have added the serial numbers over here, and the next is the 7 next. So at the bottom we see the in total inverter capacity and the total module capacity. ओके, सो ये पेज पे आपको इन्वर्टर और पीवी मॉड्यूल के डिटेल्स ऐड करने हैं। यहाँ पे पहले आप फेज ऑफ द इन्वर्टर सेलेक्ट करोगे, ये वो सिंगल फेज है या थ्री फेज है। फिर आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर एक ऐड रो बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक न्यू रो ऐड अप हो जाएगा। उस रो में आपको मैन्युफैक्चरर का नाम सेलेक्ट करना है, हर इस इन्वर्टर का कैपेसिटी कितना है वो मेंशन करेंगे और कितने क्वांटिटी है वो। फिर आपको ऐड सीरियल नंबर बटन पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वो सीरियल नंबर एंटर करोगे और सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फाइन, जब आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तब। वैसे ही आपको पीवी मॉड्यूल के डिटेल्स एंटर करने हैं, ऐड रो पे क्लिक करिएगा, एक रो ऐड अप हो जाएगी। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर का नाम सेलेक्ट करना है, आपको हर एक
एक पीवी मॉड्यूल का कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे कितने आपने क्वांटिटी यूज की है उस मैन्युफैक्चरर के, वो मेंशन करना है, और जितने आपके पास क्वांटिटी है उतने ही आपको सीरियल नंबर यहाँ पे ऐड अप करना है। फिर हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया है। ठीक है। फिर यहाँ पे फिर अपलोड फोटो करना है। यहाँ पे आपको एक जो आपने फोटो इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है तो उस साइट का फोटोग्राफ यहाँ पे आपको डालना है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो डीसीआर डिक्लेरेशन फॉर्म है ये मैंडेटरी है। और आप चाहो तो उसके अलावा जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन डीसीआर जो डिक्लेरेशन फॉर्म है वो मैंडेटरी है यहाँ पे। So on this page, basically you have to add the geotag photo of the plant, what you have installed. The type of the file could be JPEG, JPG or PDF, and the maximum size is 2 MB. Then you have to upload the documents over here. Now in this drop down, the DCR declaration is mandatory, and you can add any additional document as per your requirement. Then you have to click on this save and next. On this page, basically you have to make sure that all the protection checklist and the safety requirements which are mentioned, safety uh, precautions are already installed. If you click on no in any of the case, then you cannot proceed ahead with the installation. Then here, this is the final submission page wherein you will see all the details uh, of this installation details. Here you cannot edit anything. This is just a final view of the installation details which are added by you. Okay, and there is a send to consumer button. So on click of this, similarly to the application, this again will be sent to the consumer for final submission. So either the form filled up by the vendor or the submit installation or the installation details, the final submission will be under consumer itself. So ये पेज पे आपको सारे आपने अभी तक जितने भी इंस्टॉलेशन डिटेल्स फिलअप किए हैं वो उसका समरी आपको इस पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप एडिट कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ व्यू कर सकते हो। अगर आपको एडिट करना है तो आपको बैक पे क्लिक करके उस पेज तक जाके वहां पे आप एडिट करके दोबारा आगे इस पेज पे आइए। अ, नीचे आपको सेंड टू कंज्यूमर बटन दिया है। ये बटन के क्लिक पे ये जो इंस्टॉलेशन डिटेल्स है ये कंज्यूमर को सेंड हो जाएंगे। फिर कंज्यूमर इस डिटेल्स को रिव्यू करके फाइनल सबमिशन करेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म हो या सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स हो, जो फाइनल सबमिशन है वो कंज्यूमर के एंड से ही होगा। तो अब मैं सेंड टू कंज्यूमर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन पेंडिंग में चला गया है। और अगर आपको ऐसे देखने हैं कि आपके ऐसे कितने फॉर्म्स हैं जो कंज्यूमर के एंड से आपने तो भर दिए लेकिन कंज्यूमर के एंड से एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टेज में इंस्टॉलेशन एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग सिलेक्ट करो और click on the search. So this is what this form just we have filled up, this Mahesh Chandra's Meshram, you'll see over here. Now we'll go on the consumer side. Okay, now this is the consumer for which we have submitted the installation details. Now under the actions, there were only three buttons shown, but now we see fourth as well. That's the submit installation details. Okay, uh, then uh, once consumer want to finally submit it, then he'll click on this button, and this is the page where he'll see the all the details that are filled up by the vendor.
He'll see the vendor name, the application number, the DCR declaration and everything. Also, he can view the work agreement. Here he see the details of the inverter and the PV modules which are added. Then the photo of the uh, plant, whether he has uploaded or not, then the document. And finally, at the bottom, we have this acknowledgement where he'll select yes if he want to finally submit it. If he don't want, if he find any incorrect details over here, then he can again send it back to the vendor. तो ये पेज है जहाँ पे कंज्यूमर को उसके इंस्टॉलेशन डिटेल जो वेंडर ने भरा है वो दिखाई देंगे। इसमें आप ओपन करने के बाद सब वेंडर का डिटेल्स, इन्वर्टर का डिटेल जो वेंडर ने ऐड किया है, पीवी मॉड्यूल का डिटेल है, फिर डॉक्यूमेंट्स है, प्रोटेक्शन चेकलिस्ट और फाइनल सबमिशन, ये सब दिखाई देगा। और अगर इसमें कंज्यूमर को लगा कि कुछ गलत फिल किया है तो वो सेंड बैक टू वेंडर बटन दिया गया है, उसके क्लिक पे यहाँ पे कंज्यूमर एक रिमार्क ऐड कर सकता है और वेंडर को डिटेल्स दोबारा भरने के लिए कह सकता है। अगर उसको कंज्यूमर को सब कुछ ठीक लगा तो वो यहाँ पे चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेगा, एक्नॉलेज करेगा सारे डिटेल्स और सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट के क्लिक के बाद कंज्यूमर को हम ये कह रहे हैं कि इस वेंडर को रेटिंग दिए। तो जैसे ही ये वेंडर काम था वो अकॉर्डिंगली कंज्यूमर यहाँ पे उसको रेटिंग देगा और सबमिट कर देगा। तो ये अभी सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल स्टेप यहाँ पे पूरा हो गया है। Then under the reviews and the ratings, these are this is the page where a vendor will see all the reviews and the ratings which he has received from the consumer. So here we are showing the total number of the reviews and the stars, like 5 stars, how many, the bifurcation of the stars that he has received. Now this consumer has received 8 5 stars and 4 4 stars and 7 3 stars. Okay, then bottom we are showing the reviews that he has received. When he click on the more review, then the entire review and the feedback that he has the consumer has given to this particular vendor, that will be shown. Okay, then here on the edit, so ये रिव्यूज एंड रेटिंग्स जो पेज है यहाँ पे आपको वेंडर द्वारा दिए गए सारे रेटिंग्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे हम टोटल जितने आपको रेटिंग्स अभी तक मिले हैं वो दिखाई दे देगा। फिर कितने स्टार्स आपको कब कितने मिले हैं वो दिखाई देगा। फिर यहाँ पे रिव्यूज है, रिव्यूज पे जब आप मोर रिव्यूज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे रिव्यूज जो अभी तक मिले हैं वो सब दिखाई देंगे। Then we click on this edit profile section where you can apply for additional state. So now this particular vendor has selected for, now this was an additional like national vendor. So he cannot of course apply for an additional state, but no, sorry, this was a multi-state vendor. So he can select for an additional state over here. He'll just select the state, fill up all the entire details over here. Details mean the new bank guarantee and click on the submit button. Okay. And if he, at any given point of time he wish to edit the personal information, so he can also do that as well over here. Additionally, vendor can upload the documents such as the brochure, logo, site photograph, the GST certificate, if any, that he can add up over here. The bank details which were already filled up during the registration, that as well can be modified. Then here we are showing at the bottom all the bank guarantees details which he has submitted till date. ओके, सो यहाँ एडिट प्रोफाइल पेज है। यहाँ पे आप किसी एडिशनल स्टेट पे आप अगर अप्लाई करना है जाके, जैसे ये वाला डेटा है जो ऑलरेडी 7 स्टेट में ऑपरेशनल है लेकिन अब उसको 8वें स्टेट में जाना है, तो वो उस स्टेट को सिलेक्ट करेगा और बैंक जो नया बैंक गारंटी है वो यहाँ पे अपलोड करके सबमिट कर देगा। तो ये दोबारा से आरईसी एडमिन के पास चला जाएगा अप्रूवल के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप ब्रोशर, लोगो, साइट फोटोग्राफ, ट्रेनिंग क्रेडेंशियल जो कि ऑलरेडी है
वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। फिर आप जो बैंक डिटेल्स है आप वो मॉडिफाई कर सकते हो। फिर आप यहाँ सबसे बॉटम में आपको सारे बैंक गारंटी का इंफॉर्मेशन मिलेगा जो अभी तक आपने सबमिट किए हैं। The next is the contact details as per the discom. So in all the states, like for this particular vendor is operational in the 7 states. So the all the discoms of those particular states will be listed out over here, and you can mention the contact information of for this particular discom, like for specifically for the Andhra Pradesh Discom. If I want any dedicated person to be available, I can just mention it over here. सो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स पेज है इस पे आपको सारे स्टेट्स दिखाई देंगे जिसमें आपने खुद को रजिस्टर करवाए हो, और उन सारे स्टेट के सारे डिस्कॉम्स भी दिखेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिस्कॉम का कोई बंदा चाहिए जो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। Then the operational district is similarly what we have seen before during the registration. Like one can select in which state, in which district of the particular state I want to be operational. If I'm not selecting a particular district, then when if I, and my consumer belongs to that district, then he cannot select me. Basically, I won't as a vendor, I won't be available in their list. सो ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान देखे थे वैसा ही है कि अगर हम यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं कि हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे अभी औरंगाबाद को सिलेक्टेड में नहीं दिया है, जो राइट साइड में दिख रहा है वो सिलेक्टेड है और लेफ्ट साइड में अनसिलेक्टेड है। अगर तो यहाँ पे औरंगाबाद, अमरावती, अकोला ये सब मेरा सिलेक्टेड नहीं है। तो अगर मेरा कोई कंज्यूमर है जो इस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, तो वो जब वेंडर सर्च करेगा तो मेरा वेंडर का नाम उस कंज्यूमर को नहीं दिखाई देगा। तो the next is the product rate. This is a section where we can showcase like how much rate we can if we want. So first we'll select the discom over here, and then we'll click on the add rate. Here I'll define one range, say it's 0 to 1. The installation charges are 80,000 rupees. 0.1 or say 1 to 2. Sorry. So 1 to 2 capacity I have mentioned over here, and that specific rate will be shown to this particular discom. If I want like this rate is common for all the discom that I have registered in, I merely click on this checkbox and copy rate for all the discoms, and I can click on the submit. So यहाँ पे जो प्रोडक्ट रेट है वो हम डिस्कॉम स्पेसिफिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पहले एक डिस्कॉम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने अजमेर विद्युत को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे ऐड रेट बटन पे क्लिक करना है, तो एक रो ऐड अप हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक कैपेसिटी मेंशन करना है और फिर उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे बता सकते हो कि इतने कैपेसिटी का अगर इंस्टॉलेशन है तो इतना पैसा लगेगा। ओके, the next is the brand selection, wherein you can subscribe for any of the brand. Now here we have many brand, but in on the ground you will have at least a minimum maximum of 4 to 5 brands that you can enroll in. So if you want to select this particular brand, you click on this edit icon and then the checkbox is enabled, and then at the bottom you click on the submit request.
So once you click on the submit request, then now I have selected Adani Solar as the brand. So the request will be sent out to the Adani Solar, and if he will approve it, then the pending status will change to the approve. ओके, ब्रांड सिलेक्शन में आपको वो सारे ब्रांड दिखाई देंगे जो अवेलेबल है। एक हम हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 ब्रांड्स ही दिखाई देंगे। उसमें अगर आपको अप्लाई करना है, किसी ब्रांड के लिए सब्सक्राइब करना है, तो आप यहाँ पे एडिट आइकन पे क्लिक करके उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए और बॉटम में एक सबमिट रिक्वेस्ट बटन है, उसको क्लिक कीजिए। तो इससे आपको वो जो सिलेक्टेड ब्रांड है उसको रिक्वेस्ट चला जाएगा। और तो एक बार वो उस ब्रांड से अपलोड हो गया है तो ये पेंडिंग विल चेंज इनटू अप्रूव। The next is the consumer subsidy status. So here basically you will see list of all the application that you have filled in and the consumer has redeemed or has reached until this subsidy status, the project inspection state. So here you will see the details like the application number on which discount this you filled up the application, the consumer number, the name of the consumer, how much installation was made over here, and the subsidy amount, and the status of the subsidy, whether it is redeemed or not redeemed or it's pending for approval. Uh, इस पेज कंज्यूमर सब्सिडी स्टेटस पेज पे आपको एप्लीकेशन वो सारे एप्लीकेशन दिखेंगे जिसमें आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर, डिस्कॉम नेम, कंज्यूमर का नंबर, नाम, कितना इंस्टॉलेशन का कैपेसिटी था वो, कितना उसका सब्सिडी मिलने वाला है वो, और उसका सब्सिडी का स्टेटस अभी तक उसने कंज्यूमर ने रिडीम किया है या नहीं किया है। Then last is the change password functionality, wherein you can change your current the password. For that you have to enter your current password over here and the new password. If I'm enter, if I'm entering a new password, that password should not be I mean should not be last two passwords used. So should be completely a new, which he has not used ever before. For example, if I'm using this old password, then he will give me a pop-up that the password cannot be same as the old password. Okay, and once we click on the submit, then the application will log out automatically in 10 seconds. Okay, so now we'll see a vendor. Like this is the home page of our application, and here on the home page we are showing this registered vendors list. Here on this page, user has to first select the state, the district, and apply. Then this particular all the vendors which who are operational in the Aurangabad district of Maharashtra will be shown up over here, and user can click on this view profile button and can see all the documents and the information added up over here. So this is the case where when the consumer can find more information about you, like you can from your edit profile you can add up all the necessary details, and then consumer can have a good opportunity to see all your information. So that was all about the web application. Now we'll showcase the mobile app of this particular portal 2.0. So